Alhamdulillah, हम सब today we cherish this success with humility. हमारे heads अल्लाह के सामने सरनगू हैं, बट हम एक फैक्ट है जो रिकग्नाइज करते हैं, वो ये है कि ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होगी. इसलिए विद पैशन एंड फोकस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज प्रिपेयरिंग पीएफ ऑफ फ्यूचर with leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war, PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization एक enduring priority है और हमारी future में ऐसे ही रहेगी. With the next step, मैं आपको बता सकता हूँ 160 projects are under development right now. And a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long range precision weapons, next generation platforms, additional J-10C aircraft, and much upgraded JF-17 platforms. PF की जो कैपेबिलिटी हैं across space, EW, cyber and US, they have been substantially enhanced over the past year. ये reflect करती है एक accelerated institutional modernization that has gone on since May 2025. मैं आपको और बहुत कुछ भी बता सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ रहने दें अगली दफ़ा सरप्राइज करने के लिए. PF's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities ये भी operationalize हो चुका है. इसके अंदर मल्टी डोमेन फ्यूजन जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके अंदर इंटीग्रेटेड है और इंशाल्लाह ताला ये विल प्रोवाइड करेगा हमें कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस अक्रॉस वैरायटी ऑफ टारगेट्स जो कि कंसीव किए जा सकते हैं. आवर परसूट फॉर एक्सीलेंस इज़ कॉन्टिन्यूड और जो हमारा रिजॉल्व है टू अपहोल्ड दिस एरियल सॉवरेनिटी इट इज़ अ कांस्टेंट. इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. PF would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon of this nation. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation.